So let us start the session. Today we are going to start revision number 2 of chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Now let us see the different types of questions what we covered in the previous class. We covered measuring line segment, angles, right and straight, measuring angles, angles, acute, obtuse and reflex, perpendicular lines we cover किए थे. Direction based questions also we have seen. Now these many topics are left for revision number 2. So let us start with the triangles. Triangles already introduction part we have seen in basic geometrical ideas. यहाँ पर main जो topic है classification of triangles. So let us start with the classification of triangles. We can classify the triangles in two ways. One based on sides, another based on triangles. So let us see the classification of triangles based on sides. So there are three types of triangles. One is scalene triangle, and the second one scalene triangle, a triangle having all three unequal sides. सारे तीनों sides अगर equal नहीं रहेंगे उसको scalene triangle बोलते हैं. See this figure. AB is 2 centimeter, BC is 3.9 centimeter, AC is 3.5 centimeter. So all three sides are not equal to each other. So that is why this triangle is called scalene triangle. Next is isosceles triangle. A triangle having any two sides equal, and that triangle is called isosceles triangle. See this figure. In this, these two sides are equal. LM is equals to LN. Both are equals to 4 centimeter, right? So now the third type is equilateral triangle, in which all sides are equal. A triangle having three equal sides is called equilateral triangle. So this is the figure in which all three sides are equal to 3 centimeters. So this is the classification of triangles based on sides. Now we'll move towards the classification of triangles based on angles, right? So here also we have three types. One is acute angle, in which all the angles are acute. Okay, triangle में सारे angles अगर acute angle होंगे तो उसको बोलेंगे acute angle triangle. If each angle is acute angle or less than 90 degree, then the triangle is called an acute angle triangle. See this figure. यहाँ पे सारे angles 90 से कम है और सारे angles acute angle है. So that is why this triangle is called acute angled triangle. अगर कोई भी एक angle 90 degree हो जाएगा उसको बोलेंगे right angled triangle. So if any one angle is 90 degree or right angle, then the triangle is called a right angle triangle. See this figure. In this angle Q is 90 degree, where these two angles are acute angle. Now if any one angle is obtuse angle, that is greater than 90 degree, so usko obtuse angle triangle bolenge. See here, angle Y is greater than 90 degree and other two angles are acute angle less than 90 degree. So this is the classification of triangle. Now we'll see one example. Identify the following triangles based on their angles. See in figure 1, all the angles are acute angle. So this is an acute angle triangle. And in figure 2, one angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Okay, so this is a right angle triangle. And in third figure, one angle is obtuse angle, which is more than 90 degree. So this triangle is called an example of obtuse angle triangle, right? So now we'll move towards a few more examples. Name the following triangles in two different ways. Two different ways means one with respect to side and another with respect to angles. See first figure, all three sides are not equal. So this is scalene triangle and all angles are less than 90 degree. So acute angle, right? Scalene triangle and acute angle. Next also all three sides are not equal, but one angle is more than 90 degree, that is obtuse angle. So it is an obtuse angle triangle and scalene triangle. Now in the next one, two sides are equal. So isosceles triangle and all three angles are less than 90 degree, that is acute angle. So this is a isosceles triangle and acute angled triangle. Next one angle is 90 degree, so right angle triangle, and two sides are equal, so isosceles triangle. Okay, so now the last one, all three sides are equal, so this is an equilateral triangle and each angle is an acute angle. In fact, in equilateral triangle, each angle is equals to 60 degree, right? So this is an example. Now we are going to see some few question from exercise 5.6. Name the type of the following triangles.
triangle with lengths of side 7 centimeter, 8 centimeter and 9 centimeter. All three sides are different. So this is scalene triangle. Next, triangle with triangle ABC with AB is equals to 8.7 centimeter, AC is 7 centimeter and BC is 6 centimeter. That means all three sides are different. So this is also scalene triangle. Now the next one, triangle PQR such that all three sides are equal to 5 centimeters. So this is equilateral triangle because all three sides are equal. Now the next one angle is 90 degree. So this is right angled triangle because one angle is 90 degree. And the next one angle is 90 degree and two sides are equal. So इसको बोलेंगे isosceles right angled triangle. Okay, isosceles right angled triangle because it is isosceles also, right angle also. Now the last one angle is 30 degree, another angle is 70 degree and third angle is 80 degree. All angles are less than 90 degree, that is acute angle. So this is acute angled triangle. Now we'll move towards the next topic, quadrilateral. Quad means 4. Already we have studied in, we have already revised in revision number, basic geometrical ideas. So a quadrilateral is a polygon having 4 sides, okay? And the diagram shows, this diagram shows that quadrilateral ABCD, where AB, BC, CD and DA are the sides. ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग साइड्स बोलते हैं. And point ABCD को हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं, राइट? एंड क्वाड्रिलेटरल को हम लोग उसके वर्टाइसेस के से रिप्रेजेंट करते हैं, नेमिंग करते हैं, बट दैट शुड बी इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो दैट इज ABCD या ADCB, कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिगजैग नहीं होना चाहिए, right? So ABCD, BCDA, ADCB and so forth are the names of the same figure. अगर हम लोग उसको zigzag में लिखते हैं जैसे BDAC, so that is not a correct name of quadrilateral. Now we'll move towards various types of quadrilaterals. So first is parallelogram. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel to each other. देखो ध्यान से, PQ is parallel to SR and PS is parallel to QR. This is the notation of parallel actually, जो arrow से मैं denote कर रहा हूँ. This is the notation of parallel sides. So quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called parallelogram, and it is written as, ये दो parallel line draw करके GM, parallelogram. In parallelogram PQRS, here in the figure, PQ is parallel to SR and PS is parallel to QR. Now the next type of quadrilateral is rectangle. Rectangle is a parallelogram. It is a type of parallelogram in which one of whose measure of angle is 90 degree. देखो एक एंगल 90 डिग्री है, तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 8. जितने भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है, दैट यू विल गोइंग टू लर्न इन क्लास 8 और उसका प्रूफ पढ़ोगे क्लास 9th में. सो एक एंगल अगर 90 हो गया तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएगा इसमें, ठीक है? सो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? पैरेललोग्राम वन ऑफ दोस एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, एंड शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसा लिखते हैं उसको, रेक्टेंगल PQRS, ठीक है? इन रेक्टेंगल PQRS वी हैव PQ पैरेलल टू SR and PS parallel to QR, क्योंकि it is a parallelogram, opposite sides are parallel and angle P is equals to 90 degree, right? So the next type, square. Square is also parallelogram in which all sides are equal and one angle of one of whose angle is measure is equals to 90 degree, right? तो यहाँ पे all sides are equal, parallelogram है, opposite sides are parallel also and one angle is 90 degree. तो angle A को मैं denote कर रहा हूँ. So क्योंकि ये parallelogram है और one angle 90 degree है, so it is a special type of rectangle in which all sides are equal. We can say square is thus a rectangle having all sides equal. So in this figure, A, B, B, C, C, D and D, A, all 4 sides are equal and angle A is equals to 90 degree. Right. Now we'll move toward the next type of parallelogram, rhombus. Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. बस इतना ही बोलना है, right? So यहाँ पे rhombus में all sides are equal है, square में भी all sides are equal है. फर्क इतना है कि square में
90 डिग्री है सारे एंगल्स, और यहाँ पे नहीं है. So we can say that square is also rhombus because all four sides are equal, right? But all squares are rhombus, but not all rhombus are square, right? So in this figure, all four sides are equal. So DEFG is a rhombus. Now coming to the next, trapezium. Trapezium, at least one pair of opposite sides are parallel. ठीक है, यहाँ पे एक पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ए बी और डी सी. So this is a trapezium. Okay. Quadrilateral having one pair of opposite sides, actually at least one pair of opposite sides है, parallel is called trapezium. And in this parallel trapezium, AB is parallel to DC. Now next, isosceles trapezium. यहाँ पे देखो नॉन पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसको isosceles trapezium बोलते हैं. See, these two sides are parallel, opposite sides, and these two are equal. ऐसे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये इक्वल सिंबल डिनोट करता है, राइट? सो इफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. सो इन दिस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम PQRS, we have PQ parallel to SR and PS is equals to QR. Now coming to the last type of quadrilateral, the kite. We have studied in the previous chapter that a quadrilateral has four pairs of adjacent sides. अगर दो pairs of adjacent sides equal हो जाएंगे तो उसको हम लोग kite बोलते हैं. See, these two pairs are equal adjacent sides because D is common, and these two pairs are equal adjacent sides, B common है, right? Two sides are said to be adjacent if common vertex is there. यहाँ पर और दो adjacent sides है, ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, but they are not equal. Okay. So quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal is known as kite. So यहाँ पे देखो AB is equals to BC है and AD is equals to CD. So जितने भी हम लोग टाइप्स देखें उसमें एक कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग. Rectangle, square, rhombus are all parallelograms. Type of parallelograms. A parallelogram is a trapezium, while trapezium is not necessary to be a parallelogram. क्योंकि trapezium का मैं definition बताया था, trapezium में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों होता है. सो इसलिए वी कैन कंक्लूड दैट अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम व्हाइल अ ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम. एंड स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. ओके, स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस. एंड काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम क्योंकि ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल नहीं है. एंड अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट नेसेसरी टू बी ए स्क्वायर. रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा? जब सारे साइड्स इक्वल होंगे, और रोम्बस स्क्वायर कब होगा? जब उसके एंगल्स 90 डिग्री होंगे, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सम फ्यू क्वेश्चंस ऑफ 5.7 एक्सरसाइज. फर्स्ट इज ट्रू फॉल्स. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज अ राइट एंगल. ट्रू. एंड the opposite sides of a rectangle are equal in length. Correct, because it is a parallelogram. Now the third one, the diagonals of a square are perpendicular to each other, one another. This is also correct. And all sides of a rhombus are equal. This is also correct. All the sides of a parallelogram are of equal length. Not necessary. सभी parallelogram में नहीं होता है. किसमें होगा? Only square and rhombus में. So this is false. The opposite sides of trapezium are parallel. This is also false. क्योंकि एक ही पेयर है यहाँ पे, एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल होता है, सभी नहीं. Right. So one more question. Give reason for the following. First question: a square can be thought of as a special rectangle. Right. So rectangle square कब होता है? जब उसके सारे sides equal हो जाएंगे. So this is the explanation. Next is a rectangle can be thought of as a special parallelogram. क्योंकि पैरेललोग्राम में in parallelogram having each angle is right angle, then it will become a rectangle. Next, a square can be thought of as a special rhombus. क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया या ईच एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो स्क्वायर बन जाएगा, राइट? नेक्स्ट, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स because it is a four-sided polygon. That is why it is they are quadrilaterals. Now the next one, square is also parallelogram. Yes, because opposite sides of square is are parallel. So it is a parallelogram. Now the last question, a figure said to be regular
if its sides are equal in length and angles are also equal. तो क्वाड्रिलेटरल में कौन से टाइप में ये दोनों मिलता है, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स, स्क्वायर. तो हम लोग स्क्वायर को रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सिमिलरली ट्राइंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्विलैटरल में इक्वल होता है. सो रेगुलर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. राइट. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, polygons. A polygon is a simple closed curve. Already we have seen in the previous chapter's revision, formed by 3 or more line segments. We cannot close a figure using only 2 line segments. That is why minimum 3 line segments are required. So simple closed curves formed by line segments only, not by any curve. See these figures. All these figures are closed and made up of line segments. So these are all polygons. So कुछ फिगर्स ऐसे भी हैं जो पॉलीगॉन्स नहीं हैं, कुछ लाइन सेगमेंट से बनने के बाद भी. सो विल सी सम फ्यू एग्जांपल्स. दिस फिगर इज नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इट इज ए नॉट ए क्लोज्ड होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट, ये क्रॉस हो गया, सिंपल होना चाहिए. जब जो लाइन सेगमेंट क्रॉस हो जाता है तो वो सिंपल नहीं होता है. सो सिंस AC इंटरसेक्ट मोर देन 2 साइड्स एट वर्टेक्स C. नेक्स्ट इज this figure is not polygon because this is not made up of line segment. यहाँ पे line segment use नहीं हुआ है. Right. Now we'll see different types of polygons. The number of side 3. It is, we have already seen triangle 1 2 3 sides. 4-sided polygon is quadrilateral. इसमें सभी में 4 sides है. And 5-sided polygon is pentagon. See 1 2 3 4 5. 6-sided polygon is hexagon. 1 2 3 4 5 6. 7-sided polygon is septagon. 1 2 3 4 5 6 7. And 8-sided polygon is octagon. 1 2 3 4 5 6 7 8. And 9-sided polygon is nonagon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And the last decagon, 10 sides. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sides. ओके. सो एक बार कलर वाला पिक्चर देख लेते हैं. देखो ये ट्राइंगल है, 3-sided पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, 5-sided पॉलीगॉन, हेक्सागन, हेप्टागन, सेप्टागन, दोनों बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. 7-sided पॉलीगॉन इज ऑल्सो नोन एज हेप्टागन, सेप्टागन. And this is 8-sided polygon, octagon, 9-sided polygon, nonagon, and the 10-sided polygon, decagon. Now we are moving towards the next topic, regular and irregular polygons. So regular polygon किसको बोलते हैं? जिसमें सारे sides equal होता है और सारे angles equal होते हैं. A polygon having all sides of equal length and all angles of same measure is called a regular polygon. See this figure. This is a regular triangle, equilateral triangle, just now I told. And this is the regular quadrilateral square. उसके बाद का nomenclature नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे, प्रीफिक्स में हम लोग रेगुलर वर्ड यूज करेंगे. सो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, लाइक दैट. ओके. अगर साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, सो दैट polygons are called irregular polygons. Right. A polygon having sides or angles of different, that is not equal, is called irregular polygons. So see these figures, these are all irregular. Okay. Equal नहीं है, सारे sides equal नहीं है. This pentagon also not regular. So this is an example of irregular polygons. Now we are moving towards exercise 5.8, few questions. Name each of the polygon. So here how many sides are there? We will count 1 2 3 4. So this is quadrilateral. Here 3 sides are there, 1 2 3, so triangle. Here 5 sides are there, 1 2 3 4 5, so pentagon. And here 1 2 3 4 5 6 7 8 sides are there, so it is octagon. Right. So we'll see few more questions. Draw a rough sketch of a regular hexagon. Connecting any 3 of its vertices, draw a triangle. Identify the type of the triangle you have drawn. So this is a regular hexagon, all sides are equal and each angles also equal. चलो अभी हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो. मैं ये वाला और ये वाला कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. दिस वन एंड दिस वन, दिस येलो शेडेड पोर्शन. ओके. एंड दिस इज अ राइट एंगल. सो हम लोग को कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल.
राइट. सो अब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये वाला ऐसे ज्वाइन करेंगे. सी दिस वन and this one, this green colored, all three sides are equal, so this is an equilateral triangle, right. So अब हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे ये वाला ट्राइंगल. दिस इज ऑल्सो वन ट्राइंगल. दिस टू साइड्स आर इक्वल, so this is an isosceles triangle. Okay, now we will join like that. ये दोनों और ये दोनों ज्वाइन करेंगे, ठीक है. So this is a regular octagon and we want to draw a rectangle. This is fourth question, not the same one. Exactly 4 of the vertices of the octagon. So ये दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे. देखो ऐसे. This part, green colored part, is a rectangle. Now this we can join in another way also. ऐसे और ऐसे. देखो this one and this one. This part, the yellow colored. ओके, सो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, राइट. दिस साइड एंड दिस साइड, दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल. ओके, वन मोर वे, ऐसे क्रॉस में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों. एंड दिस पार्ट, दिस ऑरेंज कलर्ड, सो दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, 3-dimensional shapes. Right, so we have already learned about plane figures such as polygons, circles, triangles, quadrilaterals. Okay, now all those figures are 2-dimensional shapes. Now a closed figure which lies in more than one plane is called space figure or solid figure. Okay, and all around us we see physical objects which remind us of solid figures. So following are some examples which we see in our daily life. See, ball which is in the shape of sphere, ice cream cone, cylinder can, the box, it is in the shape of cuboid, playing die, it is in the shape of cube, and this is a pyramid. Okay, so each shape is a solid shape and not flat like surface of a blackboard and top of the table, etc. Right, these figures have 3-dimensional, and so these are called 3-dimensional shapes or 3D shapes. और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है फेसेस, एडजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ ए सॉलिड फिगर. सो वो हम लोग देखते हैं पहले. सो फेसेस किसको बोलते हैं? जिस जो सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ ए सॉलिड, इट इज कॉल्ड फेसेस. और दो फेस जो जॉइंट होता है, ठीक है, दो फेस जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं एडजेस. सी दिस इज द फेस एंड दो जो फेसेस हैं दे आर joined by using line segment or intersection of two faces we can say, right. So देखो यहाँ पर ये वाला edge हो गया. Okay, right. Now a corner or vertex in a solid shapes is called is the point where the face meets. यहाँ पर देखो ये वाला सारे जितने भी corners है they are called vertices. Okay, so now we will see one by one shape and we will see how many faces, edges and corners are there. So let us start with the first one, cuboid. Right, a cuboid is a 3-dimensional shape, figure bounded by 6 rectangular faces. Okay, and for example, shoe box, brick, almirah, etc. are the examples of the shape of a cuboid. So these some shapes we are seeing around us. See, tissue paper box, matchbox, brick. These are all cuboid, shape of cuboid. In the shape of cuboid, gift box, book, duster. So these are few examples which we see around us in daily life. Now we will see the elements of cuboid, that is faces, edges and vertices. So a cube has 6 faces, दो left और right side में, front back और top bottom. Okay, 6 faces, and any 2 adjacent faces of cuboid meet in a line segment, that is called edge of the cuboid, that we have already seen, right. One example of book. book में देखो, सब लोग book में देखो, अपने book में उसमें कितने सारे line segments मिल रहा है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, right. मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ और ऊपर का भी छूट गया. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया. उसके बाद वर्टिकल 9 10 11 12.
सो टोटल 12 एडजेस हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एडजेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। सो वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स, किसी भी बॉक्स को देखोगे, चाहे बुक देखो या कंपास देखो, कॉर्नर्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, राइट। टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, सो 8 वर्टाइसेस आर देयर। And cuboid has 3 distinct dimensions known as length, breadth or height, okay. And each face of a cuboid has 4 edges. देखो ध्यान से, 1 2 3 4 and 4 corners, that is 4 vertex, 1 2 3 4, okay. So now we will move towards cube. Cube is also cuboid in which length, breadth and height are equal. So सारे एलिमेंट जो हैं क्यूब में भी सेम होंगे. So cuboid in which length, width and height are equal is called cube. For example, sugar cube, die भी देखे होंगे, ice cube. These are all examples of cube. And I will show you some shapes which we will see around us in our day-to-day life. These are the shapes: gift box, dice, Rubik cube, and sugar cubes, eye cubes, tissue box. Okay, now we'll see elements. I already told, same as cuboid, 6 faces, 12 edges and 8 vertices, right. Now we'll move towards cylinder. Cylinder, a solid having a curved surface with circular ends is called a cylinder, ठीक है। सो हम लोग बहुत सारे शेप्स देखते हैं जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं, बॉक्स वगैरह जितने भी जो सर्कुलर सरफेस होता है वो सारे सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, राइट। सर्कुलर पाइप, गैस सिलेंडर, मेजरिंग जार, garden roller, etc. are all the examples of a cylinder. See what some few, I will show some examples which we will see around us in our day-to-day life. These are the few examples, ठीक है। बर्थडे केक है, कप हो गया, ड्रम हो गया, बैटरी हो गया, सिलेंडर हो गया, राइट, एंड कैंडल हो गया. These are all cylindrical shapes which we will see in our day-to-day life. Now coming to the elements of a cylinder. So a cylinder has curved surface and 2 circular faces only. So it has no vertex, ठीक है, it has no vertex and it has only 2 circular edges, एक ऊपर और एक नीचे, बस 2 circular edges ही रहेंगे इसमें, and no straight edge. Next, cone. A cone looks like the cap of a circus clown. An ice cream cone, conical tent, the tapered end of a pencil. Pencil को जब शार्प करते हैं तब वो conical shape में आ जाता है. And we will see some few examples from day-to-day life. See, ice cream cone and birthday cap and horn, okay. And this is VLC player symbol. This is also in the shape of cone, carrot, funnel, okay, and tree. बहुत सारे examples हैं other than this also. Now we'll see the elements of a cone. A cone have a curved surface. एक curved surface होता है उसमें, ये वाला ऐसे round surface होता है, and one circular face down में, यहाँ पे, okay, and it has only one vertex at the top, right, and it has one circular edge and no straight edge. One circular edge कहाँ पर होगा? यहाँ पर नीचे side में, this one. So this is the element of cone. Now coming to the next shape, sphere. Sphere is a solid shape bounded by a curved surface, like football, round marble, etc. are in the shape of a sphere. In the figure, the different types of shapes which we will see in our day-to-day life, every types of ball, basketball, volleyball, balloon, so many are there. Even earth, moon, sun also are in the shape of sphere. Elements of a sphere. A sphere has no edges, no vertices, and it has only one curved surface. Okay. So now coming to the prism. A prism is a solid with 2 identical polygonal bases and rectangular lateral faces. A prism is identified on the basis of its bases. अगर rectangular base है तो rectangular prism, square based है तो square prism. Okay. So for example, a prism in which the 2 bases are triangles is called triangular bases. So यहाँ पे देखो ये वाला base और ये वाला base दोनों
ट्रायंगल के फॉर्म में. सो दैट इज व्हाई दिस प्रिज्म इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म. और इसमें देखो कितने सारे वर्टाइजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टाइजेस आर देयर. एंड रेक्टेंगुलर फेसेस आर 2. एक ये वाला हो गया 1 2 साइड वाला, और ये थर्ड वाला. ठीक है, एक एक ट्रायंगल के जो साइड्स के साथ में जो फेस है, दैट इज द rectangular face, and 2 triangular face up and down. So I repeat, 3 rectangular 2 triangular, so total 5 faces हैं. और इसमें edge कितने देखो, मैं पूरा निकाल दे रहा हूँ. 1 2 3 नीचे 4 5 6 7 8 9, so total 9 edges हैं यहाँ पर. Okay, so 6 vertices and 5 faces. Out of 5, 3 rectangular faces, 2 triangular faces, and 9 edges, right? So now we are moving toward the next one. If the base is rectangle, it is nothing but it is a cuboid only. So cuboid को हम लोग rectangular prism भी बोलते हैं. So cuboid के सारे हम लोग already देख चुके हैं. 6 rectangular faces, 8 vertices, and 12 edges. Now if the base is square, so उसका example है cube. Cube is also known as square prism. So 8 vertices, 6 square faces, and 12 edges. So this is prism. Now we'll move towards pyramid. Pyramid. A pyramid is a solid geometrical figure that has a single polygonal base and whose sides or lateral faces are the triangles having one common vertex, ऊपर की तरफ, and it is called the vertex of the pyramid. ठीक है, sides faces of a pyramid are called its lateral faces, and the pyramid whose base is a triangle is called triangular pyramid. Base अगर rectangle होगा तो rectangular pyramid, base अगर pentagon होगा तो pentagonal pyramid, right? So we'll see one example. देखो base यहाँ पे triangle है, so this is triangular pyramid. And how many vertices are there? See 1 2 3 3D नीचे रहेगा और ऊपर एक रहेगा, so 4 vertices. How many faces? 3 ट्राइंगल के साथ वाला फेस, 3 ट्राइंगुलर फेस, और एक बॉटम बेस के साथ में जो ट्राइंगल है. सो इट हैज 4 वर्टाइसेस, 4 फेसेस एंड 6 एडजेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पिरामिड हुज बेस इज ए स्क्वायर. सी स्क्वायर पिरामिड. सो स्क्वायर के साथ में जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो 4 ट्राइंगल्स बनेंगे, बिकॉज स्क्वायर हैज 4 साइड्स, और एक फेस रहेगा स्क्वायर का. तो टोटल 5 फेसेस हैं, और वर्टेक्स इसमें 5 है, 1 2 3 4, और ये ऊपर वाला 5. ठीक है, और लाइन सेगमेंट्स देख लो, नीचे के 4 5 6 7 8, राइट, 8 एडजेस है इसके. 5 फेसेस, 5 वर्टाइसेस, 8 एडजेस, राइट. सो नाउ पेंटागोनल पिरामिड, जिसका बेस पेंटागन फॉर्म में होता है. तो यहाँ पर देखो पेंटागन में 5 साइड्स है, तो एक एक साइड पे एक एक ट्राइंगल बनेगा, 5 ट्राइंगल्स एंड 1 पेंटागन. सो 6 फेसेस आर देयर, राइट. एंड एडजेस 5, पेंटागन के 5 वर्टेक्स के साथ में 5 कॉर्नर मिलेगा, और एक टॉप में, दैट इज 6. सो इट हैज 6 फेसेस, 6 वर्टाइसेस एंड 10 एडजेस, राइट. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड वन वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 5.9 फर्स्ट क्वेश्चन. कोन यहाँ पर ये वाला है, सेकेंड वाला, एंड द स्फीयर इज बॉल शेप, दिस वन, एंड सिलेंडर फिफ्थ वन, क्यूबॉइड द थर्ड वन, एंड द लास्ट pyramid is the first one. So this is the last question of this revision number 2. So that's all for today's session. Thank you very much.